Good morning, students. We will continue with exercise 4.3, fourth sum. The sum of reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age. रहमान की एज के रेसिप्रोकल जो 3 साल बाद थी और जो 5 साल पहले थी उनका सम 1/3 दिया हुआ है. प्रेजेंट एज ऑफ रहमान निकालनी. लेट Rahman's present age x 3 years ago. Now see, अगर रहमान की प्रेजेंट एज x है तो नेचुरल बात है 3 साल पहले कितनी थी x-3. अगर किसी आदमी की एज अब 21 साल है तो 3 साल पहले कितनी थी 18 साल. ठीक है, तो 3 years ago रहमान एज वॉज x-3. After 5 years, Rahman's age will be x plus 5. सो 5 साल बाद जो रहमान की एज होगी वो x plus 5 होगी. अगर कोई आदमी अब 21 साल का 5 साल बाद 26 साल का होगा. Now according to the statement, the sum of their reciprocal of the age is 1 over x minus 3, 1 over x plus 5 equal to 1 over 3. So you solve it further. So you take x minus 3 into x plus 5 as the LCM. So x plus 5 into 1, x plus 5, x minus 3 into 1, x minus 3 into x plus 5 LCM, x plus 5 into 1, x minus 3 into 1. So this is x minus 3 equal to 1 over 3. So this is 2x. 5 minus 3 is 2. X into x, x square. 5 into x, 5x. Minus 3 into x, 3x. Minus 3 5 is 15 equal to 1 by 2. So on cross multiplication, 3 into 2x plus 2, first you solve it, 2x plus 2 over x square plus 2x minus 15 equal to 1 over 3, right? 5x minus 3x, 2x. So on cross multiplication, 3 to the 6x, 3 to the 6, x square plus 2x minus 15. So you move every term to the next side. Minus 2x minus 6x minus 15 minus 6. So it comes out to be x square minus 4x minus 21. So what we have done, we have taken Rahman's present age as x. 3 years ago Rahman's age was x minus 3. After 5 years Rahman's age will be x plus 5. Now because the reciprocal of their ages was given, so 1 over x minus 3 plus 1 over x plus 5 equal to 1 by 3. So LCM here is x minus 3 and x plus 5. When you simplify, x plus 5 will multiply here, x minus 3 will multiply here. So this is 2x, 5 minus 3, 2. X into x, x square, 5 into x, 5x, minus 3 into x, 3x, minus 3, 5 is 15, 1 by 3. So on cross multiplication, 6x plus 6 equal to x square plus 2x minus 15. This 6x plus 6 will move to left side. So x square minus 4x minus 21. You can solve it further by splitting the middle term. So now you split the middle term. X square minus 4x minus 21. 7 3s are 21. Minus 7x plus 3x minus 21. X common, x minus 7. 3 common, x minus 7. So factors are x minus 7 and x plus 3. So in one case x comes out to be 7, in other case x comes out to be minus 3. It is rejected because age of person cannot be negative. So therefore present age of Rahman 7 years.
Is it clear? Okay. Now we will continue with the fifth sum. In fifth sum, it is given in a class test the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. शेफाली के इंग्लिश और मैथ्स में जो मार्क्स हैं उनका सम 30 दिया हुआ है. अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 2 ज़्यादा होते हैं और इंग्लिश में 3 कम होते हैं तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट जो है 210 होता है. तो उसके मार्क्स निकालने हैं इन 2 सब्जेक्ट्स. So अब मान लो let Shefali's marks in maths. This is fifth question. Let Shefali's marks in maths, that is x. क्योंकि उनके मार्क्स का सम 30 है तो अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस एक्स. राइट. ये फर्स्ट टर्म आ गई. The sum of Shefali's marks in maths and English is 30. क्योंकि उनका सम 30 है तो अगर मैथ्स में मार्क्स x है तो इंग्लिश में होगा 30 माइनस एक्स. Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in English, अगर 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 कम होते तो उनके प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स होते 210. तो फर्स्ट केस में मार्क्स इन मैथ्स होते x+2. मार्क्स इन इंग्लिश होते 3 ज़्यादा होते हैं 30 माइनस एक्स प्लस 3 कम होते सच. तो इट विल बी 27 माइनस एक्स. अगर मैथ्स में 2 ज़्यादा होते दैट इज पहले x थे अब x+2 और इंग्लिश में 3 कम होते पहले 30 माइनस एक्स थे नाउ इट विल बी 30 माइनस एक्स माइनस 3. सो इट कम्स आउट टू बी 27 माइनस एक्स. सो ये मल्टीप्लाई होगा. This is x+2 into 27 minus x equal to 200 according to statement. So this is 27x minus x square, 27 to the 54 minus 2x minus 210 equal to 0. Minus x square, 27 minus 2, 25x minus 156 equal to 0. So x+2 into 27 minus x I multiplied both. So this we obtain this term. So you split the middle term. 13x plus 12x minus 156 minus x common, x minus 13, 12 common, x minus 13. So factors are x minus 13 and minus x plus 12. So in one case x comes out to be 13, in other case x comes out to be 12. So marks in maths आ गया either 13 or 12. Marks in English आ गया 30 minus 13 or 30 minus 12. So it is either 17 or 18. So this is how we can solve. Shefali's marks in maths x मान लिए, English 30 minus x. अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 कम होते तो if she got 2 marks more in maths, definitely marks in maths will be x+2. She got 3 marks less in English, then marks will be 30 minus x minus 3. It is 27 minus x. So x+2 into 27 minus x equal to 210. So 27x minus x square plus 54 minus 2x minus 210 equal to 0. Minus x square, 27 minus 2, 25x minus 156 equal to 0. So 13 12 is the middle term. So you got the factor x13 and x12. This is the solution set. So marks in maths will be if 13 taken or 12. If 13 is taken marks in maths, then in English it will be 17.
And if 12 is taken marks in maths, then in English he will got 18 marks. Thank you.